Good morning, students. As I promised you that I will make second part of narration or direct indirect speech. So here I am. Welcome back to the second part where we discuss imperative sentences and interrogative sentences. All right? Stay tuned. So, direct indirect speech. Now, we will discuss how to change imperative sentences and interrogative sentences. Now, first of all, you should know what are imperative sentences. Now, the sentences that have the sense of command, order, request, advice, suggestion, all these comes under imperative sentences. And interrogative sentences where you ask a question. Okay? It may be of two types where you answer only yes or no. Okay? And where by using WH family words like who, where, when, why, all these. Okay? Now see imperative sentences and the changes occur in these sentences. So the sentences which have the sense of request, order, command, suggestions, advice are called imperative sentences, as we have earlier discussed. Now let's see how to change these sentences. Basically, you have to change said or said to into the form where the sense of the sentence leads you, जहाँ पर आपको उसकी सेंस समझ में आती है. अगर प्लीज़ यूज़ हुआ है सेंटेंस में, इट इज़ स्ट्रेट अ रिक्वेस्ट. कमांड की फॉर्म में हमें अलग सेंस समझ में आती है. ऑर्डर की फॉर्म में हमें एक अलग सेंस सुनाई देती है. अलग मैनर में अलग ढंग से सेंटेंस डिलीवर किया जाता है. सो अकॉर्डिंगली you will choose the word. He requested, he suggested, he advised, he ordered, he commanded, like these. Okay? And the main verb of the sentence will change into non-finite verb. Change the verb into non-finite verb. Now, how can you change that? Simply by adding to into the verb. For example, play. It will change like to play. Write to write. Okay? Sing to sing. So simply by adding to the verb, you can make it non-finite. Okay? Let's see some of the examples. Teacher said to the students, don't make noise. I repeat, teacher said to the students, don't make noise. अब हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास 6 स्टेप्स थे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू व्हाट you have to just recognize all the important things like subject, object. Now in this sentence, teacher is the subject because he is the speaker. Like this, teacher is subject. And who is listening? The student. Students are object. So teacher said to the students, and reported verb here is said to. Okay. Now see the sentence into inverted commas. Don't make noise. Now how can we change this sentence? Teacher ordered the students not to make noise. Now whenever you see a negative sentence, सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नज़र आएगा, नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट लिखा हो. यहाँ लिखा हुआ है ना डोंट मीन्स डू नॉट. ओके, सो तो आपको क्या करना है? जस्ट सिंपली राइट दिस नॉट टू. ओके, देन मेक नॉइस. Not to make noise, not to fight, not to
worry, simply like that. जहाँ पर भी don't, didn't, not वाला कोई भी सेंटेंस आएगा, आप में उसको सिर्फ not to ऐड करना है, and then the rest of the sentence will remain the same. That is only in the case of imperative sentences. Okay, किसी और सेंटेंस में ऐसा होगा तो वो चेंजेस अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, बट इम्पैरेटिव में अगर नॉट है तो आप उसको नॉट टू में चेंज कर सकते हो. सिमिलरली द सेकेंड सेंटेंस, राजू सेड टू राम्या, डोंट टच माई लैपटॉप. नाउ दिस इज स्ट्रेट, एक उसको स्ट्रिक्ट एडवाइस यू कैन से, एक स्ट्रिक्टली उसको एडवाइस दी जा रही है कि डोंट यू डेयर टच माई लैपटॉप अगैन. So here you can say Raju is the subject, Ramya is object. Okay, and what did Raju say? Don't touch my phone. Now Raju forbade Ramya to touch his phone. Now here you can see don't, लेकिन उसके आंसर में तो उसने not to यूज़ किया ही नहीं. That is because of this word forbade. Okay, now forbade means किसी को आप strictly warn कर रहे हो, उसको you can say कि आप धमकी दे रहे हो कि अगर ऐसा किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. So don't use not with forbade. forbade के साथ आप कभी भी don't का यूज़ और not का यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर? फॉरबेड अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो ये आपको बोल रहा है कि आपको वो काम नहीं करना है. फॉरबेड, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉरबेड, फॉरबेड, फॉरबिडन. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी. नाउ यू कैन क्लियरली सी द वर्ड प्लीज हियर. Okay, it means it is just a request, simply a request. So यहाँ पर हमने said to को change किया requested में. He requested me to help him. Clear? I repeat, whenever you see please in a sentence, please just simply sense that the person is requesting you. Okay, so he requested me to help him. Now the main verb here is help, and we have just changed this verb into non-finite verb by adding to. Okay, यहाँ to add कर दिया help के पहले. He requested, please कहाँ चला गया? requested में. He requested me to help him. नाउ यहाँ पर हिम क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज यहाँ पर मी था और मी को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड सब्जेक्ट क्या था? ही. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम. शी इज स्पीकर एंड हिम मीन्स द बॉय इज द लिसनर. एंड व्हाट शी सेड? Please drop me at school. Now again, please. So please means the request. She requested him. Now the verb here is drop. उसमें हमने to add किया तो to drop हो गया. Me use किया गया था girl के लिए, and then we use her at school. So the sentence is like, she requested him to drop her at the school. Okay, imperatives में आपने दो चीज़ें ध्यान से देखनी है. The very first is the sense of the sentence, whether it's command, order, request, advice, suggestion, what is it, what kind of sense it has. Okay, and the second thing you have to keep in mind is the part enclosed in inverted commas, where you will change the verb into non-finite. ड्रॉप को हमने बना दिया टू ड्रॉप, हेल्प को चेंज किया टू हेल्प. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स. जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, या तो आपको येस नो में आंसर मिलेगा,
या फिर आपको एक स्टेटमेंट आंसर मिलेगा. ओके, एंड वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन which required only yes no type answer, in that case you will add if and whether to remove the inverted commas. Okay, now here the rules are very simple. आपने क्या करना है, said and said to को you just change into the asked. जब भी आपको कहीं पर said या said to नज़र आए और क्वेश्चन के एंड में आपको ये साइन नज़र आए, कौन सा साइन, दिस क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या करना है, उसको आस्क में चेंज करना है और इंक्वायर्ड में अकॉर्डिंग टू द सेंस. ठीक है, अगर आपसे कोई स्ट्रिक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जा रही है, दैट मीन्स द पर्सन इज़ इंक्वायरिंग यू, तो आप वहाँ पर इंक्वायर्ड यूज़ कर सकते हो. और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप ये बोल सकते हो कि ही जस्ट आस्क मी. ओके, तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में मिले सेड और सेड टू प्लस क्वेश्चन मार्क, you can change it into asked and inquired. Okay, and another thing to keep in mind is always replace the question mark with the full stop. जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे अपने आंसर को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लोगे सेंटेंस को, तो आप उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, यू विल पुट ओनली फुल स्टॉप. ओके, ये तो हो गया जो हमने जस्ट एक जनरल व्यू कि इंटेरोगेटिव्स में हमें क्या चीज़ें, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज टू इन्वर्टेड कॉमास. जब भी आप रिमूव करोगे, वेन एवर यू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, यू विल पुट इफ़ एंड वेदर. ओके, और ये कहाँ आएंगे, एफर्मेटिव्स में हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास बाय एडिंग दैट. रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया और वहाँ पर दैट लगा दिया. बट क्वेश्चन मार्क में जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके वी जस्ट ऐड इफ़ एंड वेदर. बट वी हैव टू टाइप्स हियर, तो वो किसके साथ जाएगा, सो वी जस्ट सिंपली पुट इट हियर. जब भी आपके पास क्वेश्चन येस नो टाइप आंसर वाला है, लाइक सपोज इफ़ आई आस्क यू डू यू वांट कॉफ़ी, if you want you will say yes, if you don't want it you will say no. तो उस तरीके के आंसर में आपको क्या ध्यान रखना है कि you always use if or whether, okay, when you want to remove inverted commas. But if we talk about WH family words, there is no need of anything to add into it. कुछ भी हमें नहीं चाहिए इसके साथ ऐड करने के लिए. यहाँ WH फैमिली वर्ड्स में जब भी आप आओगे तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. द वर्ड्स रिमेन्स द सेम. वो जो वर्ड है व्हेन, वेयर, वाई, हु, दे ऑलवेज रिमेन्स द सेम. वहाँ आप ना तो इफ़ यूज़ करोगे, ना दैट यूज़ करोगे, ना वेदर यूज़ करोगे. WH फैमिली वर्ड्स रिमेन्स द सेम इन द सेंटेंस. क्लियर? नाउ सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. Example number 1. He said to me, do you know my friend? Now here, just observe the answer. If you know his friend, you will say yes. If you don't know, you will say no. So, here you can say, he asked me if I knew his friends. जो basic changes हैं, that will remain the same. Okay? Means the how to change the tense, how to change the pronoun, how to change the subject object accordingly, वो सब बेसिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ होंगे अकॉर्डिंगली. बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अदर रूल्स, other basic rules of the interrogative sentences. For example, I repeat this sentence one more time. He said to me, do you know my friend? Now said to को हमने क्या डिस्कस किया था, अगर said to के साथ क्वेश्चन मार्क है तो हमने उसको लगाना है, उसको चेंज करना है asked में. So here is asked.
सेकंड हमने बात की थी इन्वर्टेड कॉमर्स को जब भी रिमूव करेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट में विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड तो हमने इफ़ यूज़ करना है, यहाँ है इफ़। ओके। थर्ड हमारे पास था प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होंगे यू योर यू, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ है मी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा वो होगा आई। ओके। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो, KNOW, नो का सेकेंड फॉर्म हुआ न्यू, हिज फ्रेंड। He asked me if I knew his friend and ends with the full stop. Question mark remove हो गया and simply just add the full stop. Moving to the second one, I said to him, does he come here? So I asked him if he went there. यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि कम जब भी आएगा, कम केम कम, वो चेंज हो जाएगा go went gone में। ओके। कम केम कम विल चेंज इनटू गो वेंट गॉन। सो यहाँ पर डज ही कम हियर, तो कम को हमने चेंज कर दिया सेकेंड फॉर्म वेंट। इफ़ ही वेंट देयर, हेयर को चेंज किया देयर में। जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आई मीन द कलरफुल वर्ड्स हियर इन द एग्जाम्पल्स, वो अकॉर्डिंगली कैसे चेंज हुए हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके। थर्ड सेंटेंस, he said to me, are you going there today? So he asked me if I was going there that day. Next sentence, you said to me, did you write a letter? So you asked me if I had written a letter. Clear? Now why we have used had written here in this part, had written, because यहाँ पर did use हुआ था, means past second form, and second form is always changes into had plus third form. So here had plus third form, had written. Got it? So I hope these sentences are clear. Now look at the second type where WH family words are here with us. First example, he said to her, who are you? Now here is the word, question word. He asked her who she was. Now question mark remove हो गया यहाँ से और यहाँ हमने ऐड कर दिया full stop. Second sentence, he said to me, what do you want? He said to change हुआ asked me. He asked me what I wanted. Easy. Next one, he said to you, which book did you buy? So he asked you which book you had bought. Now always keep in mind, whenever you change the direct into indirect, जब भी आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर रहे हो इनडायरेक्ट में, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका मेन सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके। जब भी आप क्वेश्चन वर्ड ऐड कर इनडायरेक्ट में यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आना चाहिए, नॉट द वर्ब। इनडायरेक्ट में जब हम उसको चेंज करें स्पेशली तब। ओके। लुक एट ऑल दीज सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट फॉर्म, who, she is the subject. What, I is the subject. Which book is the subject. When, he is the subject. How, I, so here I is the subject. तो जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा जहाँ, उसके बाद आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके। Now just quickly rewind the
टॉपिक इंटेरोगेटिव्स एंड इम्पेरेटिव्स। क्या क्या चेंजेस हमने देखे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सेड एंड सेड टू हैं उनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ही कमांडेड, ही रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड। और जो हमारे पास वर्ब थी उसमें हम टू ऐड कर देंगे। लेकिन जब भी हम नॉट वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव्स में, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसमें हम नॉट टू ऐड करेंगे। फॉरबेड जहाँ होगा वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा। ओके और इंटेरोगेटिव जो थे वो टू टाइप्स के थे, येस नो क्वेश्चन टाइप और WH फैमिली। जहाँ पर येस नो टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सेड एंड सेड टू को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करोगे। ये आप WH फैमिली वर्ड्स में भी करोगे। और जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे पास फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। देन वेन एवर यू चेंज येस नो टाइप क्वेश्चंस, सो you will change inverted comma or remove inverted comma by adding if and whether. Okay, whenever we are talking about this type of question, yes and no type. Okay, but what about WH family words? They remains the same, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। WH family word वैसे का वैसे रहेंगे और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज होगा इनमें भी। ओके So, I hope the topic is clear. If not, just watch the video, both the videos combinedly at the same time. एक बार फर्स्ट वीडियो देखो फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, ऑल द बेस्ट।